have designed a treadmill right now. So just 5 more minutes. Sure. Okay. ज़्यादा ही होगा. Okay. Let's go. इतनी इतनी सारे हैं. So यहाँ पे तुम सबने बाकी आइडियाज पढ़े सबके. कौन सा पहले इम्प्लीमेंट करें? Adjustable height Canon and camera. What should we implement first? क्या कहते हो? Any responses? भैया एक बार थोड़े और आइडियाज दिखाओ ना. Let's see. ये क्या हो रहा है अचानक से? और आइडियाज हुए. क्यों नहीं काम कर रहा? Release mini drones when about to drive or explode. ठीक है. ड्रोन लॉन्च पैड ये तो मैं बनाऊंगा. अंडरग्राउंड googly eyes rubber band shooter raspberry powered aiming system fpv helmet integration.
कोई अभी आइडिया ऐड कर रहा है बैठ के? नक्सलूजा, Yes, भैया. मोबाइल ऐप, स्पीड एंड डायरेक्शन, लेजर टारगेटिंग सिस्टम, perfect. Okay, so guys, today is all about bringing your ideas to life. ठीक है? The reason I'm also doing this activity is because for you guys to understand this. हम सबने पिछली क्लासेस में आइडियाज बनाने के एक तरीके सोचे, राइट? दैट्स ऑल इन आवर थॉट्स. नाउ there's always the challenge of creating it. कैसे अपनी थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फेल. कितनी बार यहाँ पे सबके साथ हुआ है कि तुमने ये बहुत ज़्यादा क्रेजी आइडिया सोचा, लेकिन जब उसको बनाने पे आए तो कहीं ना कहीं पे यू ऐसे फेस चैलेंजेस. हुआ है ना सबके साथ? आई थिंक यहाँ पे कोई बताना चाहेगा उसके बारे में? जिसने रेज किया हैंड, आई थिंक सहान, जस्ट गो अहेड, शेयर योर स्टोरीज. अर्जुन, गो अहेड. Yes, so we were preparing for Byte's previous year. Our idea was a wildfire detecting drone. So we had made the prototype of the drone. Then when it came to making the app for the drone, we got stuck because we did not have that much time left. That is why. आप कहाँ पे बना रहे थे? We were making it on MIT App Inventors. Happens. चैलेंजिंग है. आई थिंक वही समवन सेड इट इन द चैट. हम सबके साथ में ये हुआ है ना कि एवरीवन थिंक्स अ लॉट ऑफ आइडियाज लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. बट here in Byte, we are all about creating stuff that is, unique and creative, and उसके लिए we learn implementing our ideas. तो सबसे पहले it's about taking a notebook and a pen, right? It's about, I'll just upload some of my photos here and show you guys. मैंने लास्ट क्लास में किस किस को दिखाई थी? क्या भैया? So I'll show you guys something. I have a quick. It'll take a minute to show that. Wait off it. वो फर्स्ट स्टेप ऑफ द चैलेंज इज टू टेक अप अ नोटबुक और उसको उठा के जितना सोच सकते हो, आइडिया को ड्रॉ आउट कर सकते हो. यहाँ पे डिजाइन ड्राइंग किस किसने पहले कर रखी है? एक्सक्यूज मी, ज्यादा ही जरानी थी. यहाँ पे डिजाइन ड्राइंग किस किसने पहले कर रखी है? क्या? डिजाइंस ड्रॉ किसने किसने कर रखे हैं अपनी नोटबुक या कोई नोटबुक उठा के? किसी ने यहाँ पे डिजाइंस ड्रॉ कर रखे हैं नोटबुक पे? Nobody? चलो I'll show you guys an example. Second. Okay. ये जो फर्स्ट ड्राइंग देख रहे हो, the one I'm zooming in at. So this is the first sketch of the drawing essentially, जो मैंने स्कूल में मैथ्स क्लास में बोर होते हुए बनाया था. And from there we created this one, and then this one. ये आई थिंक ये सारे के सारे एक ही साथ बने थे. This one, just to alternate various
solutions. फाइनल वाला ये था, and सबसे फाइनल वाला is the one I'm going to show in my video again. So all of those design sketches led all of those design sketches led to this. See any similarity there? See any similarity there? Guys, यस भैया। भैया हमको दिख ही नहीं रहा। भैया दिख नहीं रहा। अब Yes, दिख रहा भैया। है? मेरी वीडियो पे देखना है। Just focus on my video. वो जितने भी sketches तुमने पहले देखे, they were all for this guy. So I created it and I flew it. It flies really well. But the essence of it is everything started from a notebook. Whenever next time you have a design in mind, any idea in mind, take up a notebook and go ahead. Is that clear? यस भैया। भैया लियोनार्डो डा विंची का भी ऐसा ही डिजाइन मेकिंग प्रोसेस था ना? Hmm. Each and every great designer, actually not designer, each and every great design starts with a notebook, guys. ठीक है? Just know that. तो अगली बार कभी भी घबराना नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स वो है जस्ट पिक अप वो यस वी कैन यूज चैट जीपीटी टू बट आई वुड नॉट सजेस्ट यूजिंग एआई कर सकते हो उससे आइडियाज मांग सकते हो पर पहले बस खुद से बैठो जस्ट राइट इन नोटबुक्स आई विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर यू गाइस साथ साथ my PFPS it is also the design of a airplane भैया AI ग्लाइडर uses लग रहा है आपका। this is a board based glider सही कह रहा है I'll just create a doc for all of you actually जिसमें मैं points note करो ये क्या चल रहा है अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या कह सकते हो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग अ ड्राइंग एंड डिजाइन इम्प्रोवाइजिंग इट। इम्प्रूव इट। बिफोर इम्प्रूविंग इट लेट्स से Implement मैंने it. ड्राइंग बना ली उसके बाद कोई नहीं बोलेगा Make sketches, finalize a sketch and see all the problems and all the benefits of that design. नो इसका विनर है वेनेसा बंसल who said analyze what we need to make it second step is always to analyze the resources that you'll require मेरे को इसको metal का बनवाना है तो there I'll just put some
Analyze की spelling गलत है. Materials, cost, how will I get it? ये सब. Plan the build. Exactly. ये सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए हो रही है. फर्स्ट स्केच के लिए. What's the third step? Guys. Finding any problems? Implementing the design? Hi guys, मेरा network gave up on me right now. So okay, we'll resume it. The third step. क्या बोल रहा था भाई? The third step, please. That we'll do right now. So whether you're doing a sketch, painting, or anything, first, especially when it's a robotics project, design it inside of a software. So अब हम मिलके डिज़ाइन करेंगे Byte Forge 1 on Tinkercad अभी तो because it's the more simpler version. I don't want to do advanced CAD designs. वो तुम 3D design में सीख रहे हो शायद. अच्छा until I do that, 3D design में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? पहले कैट चल रहा था लेकिन अब शायद से ब्लेंडर कंटिन्यू होएगा. भैया ब्लेंडर. ब्लेंडर. वाओ. सो तुम्हारे इग्निट सेगमेंट देख के मैंने एक बॉडी तो डिज़ाइन करी. So I'll just go over the body right now. ये मेरे sketches से बनी है. Actually, do you guys? I'll just show you the sketches first. Let's go through my sketchbook. Let's go through some sketches. ये वाले नहीं. Yes, Byte Forge 1. His sketches are here, and nobody is going to judge me. But there we go.
तुम सबके आइडियाज इनकॉर्पोरेट करने में बहुत दिमाग लगा है मेरा. Can all of you see the sketches? Yes, Yes. Bhaiya. So I'll just break it down for you. This is the basic drawing that is in my mind. So I'll just point to a component. Someone here pointed out a 360 Canon with laser and a scope. है ना? Me. Yes. So this is the laser. This. This is the 360-degree rotating servo. This is the shooting mechanism का loading area. The second part of it, हमें कौन से materials लगेंगे? So 15 kg servo which is not fixed. All of that planning. Let's go to the second design. The following, a bit more clear than that. So ये हमारा shooting वाला बना. And let's go ahead. आगे क्या क्या है? Faki, I don't think they're here. Let's just switch it off for now. So from those sketches, we created this body, which you see on the screen. So we have this area. I'll just go over the design of the body right now. We have this component to store all our electronics, four holes for the motors, and to run the wiring. यहाँ पे you see this entire blank area. Yes, Bhaiya. This is where we'll mount the cannon and all the extra things you planned for me. And this is where the loading mechanism and the computer chips will be placed. That's the planning for now. Let's see how it goes. अब बाकी का सारा मैं तुम्हारे साथ continue करूँगा. So we have some treadmills कह रहा हूँ, caterpillar wheels. Let's just put them in. Wait, group नहीं है. बहुत कम नहीं है. Wow. अच्छा, even when we are designing in a 3D software, there are two ways to go about it. First is I'll write it right here. There are two ways to go about it. First is a rough design, a very visual rough design. It should just give you a visual of how it will look like. Okay, so in this design, which I'm doing, it is not about precision. Let me just share my entire screen. So in this design, it is not at all about precision. It just giving me a visual. इसको मैं आगे 3D printing के लिए नहीं भेजूंगा. This is a very rough design in that sense. And that's the kind of design you'd expect on a simpler software like Tinkercad. So हमने बाइट फोर्ज के ट्रेडमिल्स ऐड कर दिए, ट्रेडमिल्स व्हील्स ऐड कर दिए. किसी को डांट पिट रही है मेरे घर में.
अच्छा लग रहा है Yes, भैया. आपको? Yes. ओके, अब तक हमारा ऐसा चल रहा है, ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। हमारे पास मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था, 360 डिग्री रोटेशन मोशन, और क्या क्या था, क्या क्या डाले, अब बताओ एक एक करके। 360 Laser डिग्री scope. रोटेशन मोशन, लेजर गाइडेंस को, अब वो हम डालेंगे कैसे, देखिए। Through LiDAR. लाइडर तो ठीक है, एक एक करके चलता है। सबसे पहले वी हैव टू ऐड अ कैनन मैकेनिज्म। अब आई वांट द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइस, यू अभी यहाँ पे सबसे सीनियर क्लास कौन सी है, 11 का कोई है? One Satija. So at your stage you can start using advanced CAD software, but for a lot of you, just to imagine your project, Tinkercad की एक gallery होती है, just go there and search whatever you want. So I'll just add tank shooting mechanic. अच्छा, so you can explore all kinds of design here, काफ़ी inspiration मिलती है। क्यूट है? नहीं, हमारे एक में वो नहीं है। अच्छा, हाउ शुड वी शूट द बॉल, हम शूटिंग करेंगे कैसे, वो हाउ विल बी प्रोपेल द बॉल? सो द एमो आई हैव चोजन फॉर नाउ इज अ बॉल, पिंग पोंग बॉल। हम उसको शूट कैसे करेंगे, Wheels. लेट्स फिगर दैट आउट। Constantly rotating wheels. यस, वन वे, और किसी के पास कोई तरीका है? व्हील्स ऑन बोथ साइड्स, Pressurized वे, CO2 calendars. Catapult. Uh, CO2, लेट्स फिगर इट आउट। बट इसको डिजाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, एज क्रेजी एट इज, इसको catapult. पकड़ के catapult को how will we control it with a remote control? मेरी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग जाएगी, गन्स की फोटोज चल रही है, क्या सिखा रहे हैं Solenoid. बच्चों को? सोलेनॉइड इज वे, We ओके। can have memory alloy. We can have it arranged into a spring, and once it's short, we can have electricity pass through it to gain back the spring shape. परफेक्ट। थर्ड हमारा था CO2 एयर प्रेशराइज, और बताओ, पिस्टन्स, स्प्रिंग, और बताओ। Gunpowder ignition. मुझे डालने पे धान पिटेगी, बट ओके, गन पाउडर Stretched, इग्निशन। stretched membrane, हम्म, stretched membrane attached to a spring. that's as good as a spring loaded air cannon, और बताओ something unique, Why does flywheel have three E's in it? because मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते थे। Use a syringe bottle pump, whoever thought of that is actually thinking in a very good direction,
And that's what I mean by a spring-loaded air cannon, by the way. Can we use hydro pressure? Okay, hydro powered cannon काफी है आज के लिए. अब इनमें से फिगर आउट करके कौन सा हम कर सकते हैं. Railgun, What's a railgun? an electromagnetically accelerated iron shot. प्रोजेक्ट Pretty एयर की easy. वीडियो देख के आ रहे हो. No, I was thinking about it for a long time. कोई ना. Anything else? Yeah, we have enough ideas for today. I think we do. अब हम थोड़ी बहस करते हैं कि which one will select for now. Let's go with the flywheel. अभी के लिए यहाँ पे जो भी है assignment before the next class is go to Tinkercad or go to Google and explore designs that are 3D designs for any of these. For example, I just explored a design for spring powered cannon 3D design. Let's see. मिल गया. Wow. So whenever you're creating a 3D design, your best help is the internet. I'll just write it. Explore tons of designs. Okay. So and you can download any kind of design from the internet. बहुत सारे 3D designs free में मिल जाता है. So let's see if we can find some kind of a Canon design that's brain powered on device. ये अच्छा लग रहा है. Simple. ये ब्लेंडर में बना हुआ है नहीं. So शायद this से. is a website called Yegi. इस पे basic STL designs. You guys know what a STL is? Anybody? No. So It's an engineering blueprint or 3D printing file. yes, you are right. So जैसे तुमने JPG देखी होगी, एक इमेज को Yes तुम भैया. JPG के फॉर्म में लिखते हो. So all the 3D designs mostly are stored in a laptop as STL files. तो ये जो images हैं, ये usually laptops का जो ओरिजिनल 3D व्यूअर होता है, ये उसके हैं फोटोज. सो कुछ ब्लेंडर पे भी, यहाँ पे कुछ ब्लेंडर के भी डिजाइन हैं जो सामने हैं, कुछ टिंकरकैड के भी प्रेजेंटेशंस हैं. लेट्स फाइंड एन आइडियल वन फॉर अस एंड विल डाउनलोड इट एंड विल पुट इट ऑन बाइट फोर वन. फ्लाईव्हील तो कोई भी डाल सकता है. मेरे को स्प्रिंग पावर्ड पसंद आया. डालें? अच्छा लग रहा है सबको? Yes भैया.
चलो इसको डालते हैं बाइट फोर्स वन में. Until this is downloading, मेरा एक भैया और चीज वो डालने का मन था. पेड है. पेड है. यस भैया. वहाँ पे लिखा है. नहीं भैया, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू आइटम ऐड ये टू डाउनलोड कार्ट. के हाँ साइड में हाँ. यार. ओके. बहुत बड़ा फेल हो गया मेरा. आई फील सो डाउन. वाह. कोई ना. लेट्स नॉट गिव अप. मैं ढूंढ के रहूंगा फ्री डिजाइन. दिस लुक्स गुड. अच्छा अंटिल देन मैंने ना एक हैकाथॉन के टाइम पे एक रोबोटिक आर्म बनाया था. लेट्स सी इफ वी कैन यूज दैट. अच्छा तुम सबने वो प्लेन देखा था. यस भैया. सो हियर इज अ लैंडिंग गियर फॉर दैट. तुमने डिजाइन में वो लैंडिंग गियर देखा होगा. This is also one example of, you know, creating a 3D design from your sketches. Tinkercad पे बनाया था. देखने का. Okay. Yes. इसको 3D प्रिंट करने के लिए मैंने भेजा था. इसके इंडिविजुअल पार्ट्स भी हैं. आगे I'll show you. So all of these parts assemble into the landing gear, which is here. ये भी इसी प्रोसेस से था. That you sketches in notebook, create parts out of it, and then you know. But this is the second part. We'll go towards हाँ ये रहा मेरा डिजाइन. डाले हैं वाइट फोर्स में. क्या किस कहते हो. चीज के लिए ऐड होएगा भैया ये? मस्त लग रहा है मेरे को. लाइक अ रोबोटिक आर्म इन वाइट फोर्स वन. क्या कहते हो. तो लेकिन इसका फिर यूज क्या होएगा? Pick up the ammo. looks cool. We can Looks pick up cool is a ammo. priority, guys. Yeah, we can pick up ammo. We can pick up the enemy bot and you know fire its wirings. I don't know, this looks good. Okay. Byte Forge 1 has a robotic arm on its back. ठीक है. Okay. On to our design. Desktop cam. ये फ्री में मिल गया. So actually आज पे टाइम भी हो रहा है. Today we'll do the rough design. Next class with Abhay Bhaiya, what we're going to do is we are going to create a precise design. इसको 3D print करने के लिए. And I will spend some of my money to get it 3D printed. जो अभी भैया डिजाइन बनाते हैं. ठीक है. And we'll have a working Byte Forge 1 by the end of our workshops. क्या कहते हो. डन Great भैया. idea.
Done, done. Bhaiya, can Super. we go on War Thunder forum for our SPLs? Can we? Go on War Thunder forum. उससे क्या होगा? They often leak military secrets and files. अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे को उसको करूँगा. Canon is taking too much time for me to figure out. Next time. पर प्रोसेस को मैं समझ आ गया. That's important. Next thing, laser guidance. I will put it inside the document. मैं पता नहीं हूँ मेरा कित गाइस अपने आइडियाज में से सिलेक्ट करो अब और कौन सा डालें हम. एक लेजर गाइडेंस डाल रहे हैं, शूटिंग मैकेनिज्म डाल रहे हैं, 360 डिग्री टर्निंग, ड्रोन, The rubber और band shooter. रबर बैंड शूटर would be थोड़ा difficult. A solar panel we can add. In Yeah, fact, we'll add it's it. simple. We can have rubber bands attached to a solenoid, and uh, at the end of a servo motor, we can have an arm, and that arm can pull back rubber bands. Will you be able The to design me something for that, which I can put inside my 3D design? I will see. I'm busy today, but I'll see tomorrow. मेरे पास एक था लेजर गाइडेंस का डिजाइन. अब ये भैया मत कहना यार, मैंने चोरी किया, ये हमारे स्कूल का ही कोई डिजाइन है. मैं वही पूछ रहा था कि आपने बाइट फोर्स 1 का डिजाइन किया था, ये कोई और डिजाइन है अलग? नहीं नहीं, ये तो ठीक बाइट है। फोर्स बन गई है. ये ये वाला जो टैंक था ये तो कहानी अलग है, किसी दिन और सुनाएंगे. What is important is this looks like a laser guidance system. हम इसको वाइट फोर्स वन में डाल देंगे. अभी it's all about visualizing. It's nothing about precision drawing, जो अगली क्लास में एक्चुअली करेंगे. उसमें फिर नो शॉर्टकट्स, उसमें देयर इज नो कॉपिंग, देयर इज नो इंस्पिरेशन. इट्स ऑल अबाउट डिजाइन. अभी वी इज गोइंग टू टेक. So I'll just add the laser guidance system right near the robot. एक्चुअली राइट में नहीं, यहाँ पे हमें कैनन लगाना है ना. सो इसी एक्सिस पे हम कैनन को लगा सकते हैं. क्या कहते हो? इसी एक्सिस पे हम कैनन को लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ लेजर घूमेगी वहाँ वहाँ हमारा कैनन घूमेगा. कैनन का डिजाइन यहीं से कॉपी करना. ऐसा तो नहीं दिखेगा. नहीं, आई वॉन्टेड अ क्लॉ मैकेनिज्म. यहाँ पे आई थिंक किसी ने डाला भी है. Isn't the arm supposed to be the claw mechanism? आर्म तो है ही है. वेयर इज, तो equivalent नहीं होगा arm और claw? वो भी डाल देंगे. ओके आई लॉस्ट क्या. आई लॉस्ट इट. नो आई फाउंड इट. ओके, अच्छे से जूम. लेट्स सी मोर ऑफ योर आइडियाज. Create sensor mounts like
speed and direction control, move it to the speed we want. ये सब तो हो ही रहा है to the control systems, so that we'll just put inside a document. Camera plus scope, हमने laser डाल दी. Shoot balls that can control the trajectory. How will we do that? भैया, is it possible to add voice command? Yes, we can. In fact, अभी के लिए we'll put it in our vision board. Bhaiya, can we add an antenna? भैया वॉइस कमांड का आइडिया दिया हुआ है इसमें मैंने। मैंने मुझे भी पता किया है, हुआ है भैया। इसलिए तो मैं इसको विजन बोर्ड में डाल रहा हूँ. Bhaiya, let's have an antenna For for receiving the signals of remote control, or uh, for jamming things like drones, the intercepting remote missiles. control I have already has an antenna. और एक्चुअली रिमोट कंट्रोल टैंक है ना, हमें किसी की सिग्नल Yeah, जाम the नहीं करनी. tank also has to have a antenna, right? चल एंटेना डाल देते यार, तो कह रहा था. And an antenna also function as a signal jammer. Okay, Can we add light to it? Like LED, RGB? we can. Guys, now I want you all to pay attention. जो बोर हो रहे थे कि अमान भैया डिजाइन करके जा रहे हैं. Bhaiya, add तो googly eyes. googly eyes, of course, how could I forget? Let's not get distracted there. पहले यहाँ पे जो कह रहे, one more step, exploring tons and tons of design, creating a vision board, a document which precisely lists all the features you need to be there. Our vision board is going to be this page. ठीक है? I will share all of this with you. भैया, हम्म, एक और आइडिया है, लेकिन आई थिंक सो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव आइडिया है। बोल यार. मैग्नेट ऐड करना, ताकि वो मैग्नेटिक सरफेस मेटल सरफेस स्कैन कर सके। एंड लाइट। नहीं, too much. And with this An point, I adhesive come. surface of the back. Anji, Can we add an adhesive surface on the back why? in case uh, there's recoil when we shoot? It can mount itself to something, and in case if something is trying to push us, it can stick to something solid or a wall. I get your point, but that's where I will divert all of your attention to this point. Analyze the resources required. ठीक है, मैंने अब तक यही किया था कि क्रिएट सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया था. आई विल स्टार्ट एन एक्टिविटी इन 5 minutes जिसके अंदर हम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इस डिज़ाइन के लिए सोचेंगे बैठ के, एंड आई विल लिस्ट देम डाउन इन डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो भैया, बोलो. इसमें गिम्बल या फिर जायरोस्कोप ऐड हो सकता है? हो सकता है, बट व्हाई डू यू वांट टू ऐड अ जायरोस्कोप? ताकि वो ऑटो स्टेबलाइज हो जाए। ऑटो स्टेबलाइज क्या करना है? टैंक इज ऑलरेडी अ स्टेबलाइज्ड व्हीकल ऑन द ग्राउंड. या बट अगर For the aiming, he's saying. या फॉर द एम वी कैन. एम के लिए तो लेकिन वो इंफ्रारेड सेंसर्स भी कर सकते हैं, वो बेटर होगा। दैट इज व्हाई वी हैव अ विजन बोर्ड.
अच्छा, विजन बोर्ड पे सारे आइडियाज नहीं आएंगे, ओनली द वंस वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट. ओके, one last thing I'll wanna add to it is a part of a design I created a long time back for my DRL project. So this design is in the same process. बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है. तुमने इसकी वीडियो भी देखी थी, आई बिलीव, है ना, जो अभी भैया ने फर्स्ट क्लास में दिखाई थी. यस भैया, यस भैया. That is again the design to. So now this is the visual design of it. जैसे मैं उसका बना रहा था अभी. हमने यहाँ पे कहाँ पे सर्वो प्लेस होगी वो है. जैसे भाई अभी एक 3D प्रिंट नहीं होगा ना, बट ये यहाँ पे सर्वो प्लेस होगी ताकि ये आर्म्स मूव कर सके. मोटर्स कहाँ पे प्लेस होंगी, व्हील्स कहाँ पे प्लेस होंगे, इसका शूटिंग मैकेनिज्म ये रहा. कहाँ कहाँ पे मोटर्स प्लेस होंगी, कौन सी मोटर्स प्लेस होंगी, कहाँ पे सर्वोस प्लेस होंगी. एवरीथिंग इज इन दिस डिज़ाइन. सो ये रही सर्वोस हमारी, कौन सी प्लेस होंगी. दीज आर 15 kg सर्वोस. एंड इससे मैं ये वाला उठा लूँगा क्योंकि दिस इज अ वेरी कूल थिंग. और हमारा बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा ये डाल देंगे तो. ओ डैम, ओ डैम, अच्छा लग रहा है. ये ज़्यादा ही कुछ मॉन्स्टर भैया टाइप लेकिन बना दिया हमने. यूज का है, यूज क्या है इसका? इसका यूज़ आई थिंक हाँ मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा था. एक सेकेंड. लेट्स सी, कोई ना कोई आइडिया तो पकड़ा होगा इसने. आई हैड इट इन माय माइंड. Won't it cost a lot of resources to make? इट माइट थर्मल विजन सेंसर्स एक्चुअली नहीं है. व्हाई डिड आई हैव इट इन माय माइंड. अच्छा तुम सारे फिर वोट करके उसको हटा दे. हटा देते हैं, चलो. सारे तो माने नहीं. ओके, इसका शूटिंग मैकेनिज्म I really wanted to design it in this class, but I'll take my time for it. तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा. This design will be shared with you. Until then, let's do an activity together. अब तक तुमने फर्स्ट पार्ट तो सीख लिया ना, about creating sketches and a visual sketch on a 3D software. Is that Yes, clear with everybody here? yes भैया. पक्का. मैं ना Yes. देखो मैं कभी कभी फ्लो में बह जाता हूँ समझाते हुए. गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. माय इंटेंशन इज जस्ट तुम्हें न्यू नए नए एग्जांपल्स दिखा के दिखाना व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज विद थिंग्स. सो जस्ट वांट टू नो सारे के सारे सेम पेज पे है ना मेरे साथ. Yes भैया. सारे के सारे जस्ट गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स. परफेक्ट. सो अब तक हमने जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ तक तो बहुत क्लियरली कर ही लिया. जिससे हम बह ना जाए. मैं इन पॉइंट्स को मैं करूँ. picking up a notebook and emphasizing the designs. हमने 2 डिजाइन स्केचेस देखे एंड हमने ये वाला पार्ट देखा. ये वाला पार्ट नहीं देखा. योर बेस्ट हेल्प इज द इंटरनेट हमने एक्सप्लोर किया. क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड हमने एक्सप्लोर किया. एक चीज़ एक्सप्लोर करना रह गई.
एनालाइजिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, डिजाइन इट इन अ सॉफ्टवेयर भी हमने एक्सप्लोर कर लिया वरना एक चीज रह गई, that is this analyzing the resources. So I'll just do a quick activity right now before we end the class officially क्योंकि मेरे को 1:30 का टाइम लगा. That is ये प्रोजेक्ट है तुम्हारे सामने, ठीक है. Let us design this on our vision board. Now I want all of your opinions कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे पहले इसकी बॉडी के लिए, which will be the most efficient. Explore any Steel material alloy you want. Okay, आगे. Okay, any alloy. Why? due to It the will cost a strength lot of it. more. Then we can go with PLA. PLA is going to be very, Safe, but not brittle. sturdy. I was thinking carbon fiber for the body Can of it. we can't we combine PLA and carbon fiber in some places? Very expensive. आगे बढ़े. रियांश का मेरे को मैसेज पढ़ना है. PVC sheet, very nice. PVC sheet is one of the best. Laser cut acrylic, yes. Anybody else? Chat पे डाल दो if you don't want to speak. Ceramic. Ceramic is going to be brittle. Uh, wheels, yes. अच्छा, how are we also going to get these materials? ये भी साथ साथ सोचना. So I We will can have also glass for the scope. analyze how you get these materials. तो अगर मैं देखूँ कहाँ पे क्या बताता है, PLA मेरे को आराम से मिल सकता है. कार्बन फाइबर आई कैन गेट फ्रॉम Amazon. PVC शीट आई कैन गेट फ्रॉम Amazon. Acrylic sheets I can get from Amazon. What अब इनमें से और किसके पास ऑप्शन है? I was also thinking one thing, aluminium body. That can also be done. Aluminium for the claws. Yes. Aluminium is a very cheap metal for that sense. वो हो सकता है fabricate. Rebar in the four edges. Hmm? Rebar in the four edges. Okay. I will not go with that. I will not put it. It's too complicated. कितना सिंपल. अब इनमें से कौन सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन समझ सकता है फॉर अ टैंक? Aluminum body. मैं PLA हटा दूंगा. टू ब्रिटल. कार्बन फाइबर गुड. लेजर कट एक्रिलिक आई विल डू अगेन PLA जैसा है एंड नॉट ओके को वर्क विद. ट्रस्ट मी. So we have aluminium body, PVC sheet, carbon fiber, any one of which we can use for the purpose. Tires के लिए hard rubber. Yes. Reyansh just wrote message. I want everyone to focus on. Manya has raised her hand. Please go ahead, भाई. बोल दिया करो. गलती से था क्या? भैया आपने ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले क्या? कि जो जो साथ चल रहे हैं वो हैंडल्स करो. बोला तो था लेकिन अब सारे बोल बोले हो रहा है.
अच्छा, plastic. So Riyan just gave a wonderful idea. You use plastic containers for the basic model. अब जैसे अगर मेरे को फाइनल वो नहीं मिला, मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा उठाया और उसके ऊपर सब कुछ माउंट करके देखा हाउ द मैकेनिज्म कैन वर्क. दैट इज समथिंग वी कैन डू. तो घर के मटेरियल्स भी उठा सकते हो. नॉट अ बैड आइडिया. In fact, I will I had an example I really want to share in this case about this. तो ये कुछ प्लेन्स है जो मैंने बनाए थे. इनमें से एक प्लेन है ये वाला. ये दिख रहा है. यस भैया. ये पता है क्या है? ये छोटा सा पीस ब्लू कलर का. कार्डबोर्ड. नहीं. किसी बॉटल का ढक्कन. क्लोज इनफ. चल मैं एक और पे. इसमें ये चेंज हो गया. कम ऑन. बटन. क्लोज इनफ. मेरे को बेसिकली एक हैच को क्लोज और बंद करने का तरीका ढूंढना था. तो मैंने यूज किया एक पुराना बेब्लेड का पार्ट. ओह. ये देख रहे हो यहाँ पे ये लगा हुआ है. क्लोज दिस अप एंड भी ये घुमाया. हमारा हैच लॉक हो गया. तो ये बेब्लेड्स जो 2011 में आते थे उनका एक लॉकिंग मैकेनिज्म था. मैंने उनके पार्ट्स तोड़ के अपने एयरप्लेन में डाल दिया. सिंपल इनफ. यस. एंड दैट इज हाउ रिसोर्सेज उठा उठा के हमने वो अगेन यही बात है. अब बाकी हम अगर एक खेत में और देखें एक्चुअली नहीं. हाँ, जिसने मेरे को पीवीसी पाइप्स का आइडिया दिया. इसका शूटिंग मैकेनिज्म पूरा पुराना पीवीसी पाइप से बना हुआ है एंड फ्लाई व्हील से बना हुआ है. ये सारा जो है प्लेन्स, ये प्लेन स्पेसिफिक मटेरियल से बने हुए हैं. आपको सोच और क्या क्या है. देन देयर इज दिस डिजाइन. ढूंढा, कुछ किया, फाउंड मैकेनिक्स काम करके. तो उठा लिया मैकेनिक्स, उसको जोड़ दिया, क्रिएटेड अ वंडरफुल आरसी कार. कभी कभी खरीदने भी पड़ जाते हैं पार्ट. सो दिस ड्रोन दैट आई मेड हैड अ प्री मार्केट बॉडी. ये कभी भैया कभी ये सब कल भी दिखाया था. दिखाया था. यस भैया. कब? अबे मैंने. नहीं आपने पिछले साल. हाँ, पिछले साल तो दिखाया था. पिछले साल तो इसकी केस स्टडी भी करी थी. हाँ. हम्म. तो यस, एवरीथिंग एंड एनीथिंग was there. उस सबके मटेरियल्स के बारे में सोच सके हैं. देयर इज डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट वो. चेक दैट आउट एंड राइट दैट इन योर विजन बोर्ड. ठीक है. सो विद दैट ऑल ऑफ दीज हमने देख लिए. आई वुड ऑल्सो वांट गो अबाउट. अगर मैंने प्रेजेंटेशन खोली है, जो मैंने विजुअल डिजाइन्स का प्रोसेस दिखाया था. सो आई वाज क्रिएटिंग अ स्पेस स्टेशन. मेरे को एक कंपटीशन के लिए बनाना था. फर्स्ट डिजाइन ये था. बहुत थिंकर कैट पे था. रफ विजुअल था. आगे बढ़े. अगेन यही छोटे छोटे डायग्राम्स, ड्राइंग. आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बढ़ते गए. ये हमारा एक डिज़ाइन बना जो पहली बार मेरी टीम कैप्टन ने अप्रूव किया. एंड फाइनल डिज़ाइन वाज दिस. दिस एक्चुअली वन मी अ वेरी गुड प्राइज. एवोल्यूशन देख रहे हो. एक्चुअली फर्स्ट डिज़ाइन आई कैन शो इन में. नहीं, आई कैन शो. नहीं पड़ा. एवोल्यूशन देख रहे हो. फ्रॉम यहाँ से लेके जो एक फाइनल डिज़ाइन बना है,
तुम्हें इसको देखना है तो देख सकते हो. We have a new watch. जल्दी आ गया. So this was the final design. इसका करके इसको. You go through a lot of process, a lot of prototypes on a, and that's the importance of creating a 3D design. When you can visualize it, you can visualize all the changes you want. And if I may, in the next or few classes, I will share the first design जो मैंने again notebook पे बनाया था. Let me see if I can share it right now. होगा मेरे पास. Yes, मेरे पास है. Luckily enough. एक second. मेरे पास है guys वो design. So I can show it to you. जो मैं notebook sketches की बात कर रहा था बकवास. You can now see a very practical example for that. Just give me a minute. Figure it out करना पड़ेगा. Come on, कहाँ पे है तू? कहाँ पे? Okay, there we go. Yes. जो तुम देख रहे थे ना अभी स्क्रीन पे, this is the first design. You see how the notebook sketch process comes along? समझ आ रहा है सबको? Yes, भैया. Yes, भैया. So you go from this. This is the entire thing from today. You go from such a design. क्लास के बीच जब बोर हो रहे हो, डूडल कर करके डायग्राम्स बना के. आई एम श्योर तुम सबने डायग्राम्स साइंस क्लासेस में बनाया. डायग्राम्स बना के. योर ड्राइंग्स डोंट नीड टू बी परफेक्ट. जितनी घटिया बनानी बनाओ. पॉइंट आउट. जस्ट बी वेरी गुड विद द पॉइंटर्स कि यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा. You go from this design to something like this, and the final that is something like this. It's an entire process that creates a journey from design to reality, and from that we circle back to the main thing, that is design to reality. इसका first phase आज हमने समझ लिया, that is putting it to a sketch. ठीक है, and then pointing out all the features that are in a vision board, then figuring out how we will obtain those. इसको ना हम आगे कर देते हैं. ये आगे होगा, I believe. So this is gone from, and this will lead you through the first stage of your process from design to reality. ठीक है? Clear to everybody? Yes, भैया. Second, अब इसके बाद स्टेज आता है precision designs. This will be covered up in the next lecture by Abhay Bhaiya, where we will go over ऐसे डिजाइन्स बनाना. वो प्लेन देखा था सबने? Yes. उसका मैं तुम्हें एक प्रिसिजन डिजाइन दिखाता हूँ जो मैंने उसके लेजर कटिंग के लिए बनाया था. नाउ दैट यू विजुअलाइज योर डिजाइन ना, तुम्हें उसको रियलिटी में लाने को तुमने सोच लिया कि मैं उसे बनाऊंगा कैसे. अब जैसे प्लेन बनाते हुए मैंने सोचा कि मैं इसको लेजर कट करूंगा कार्डबोर्ड को. सो आई नीड अ प्रिसिजन डिजाइन दैट विल हेल्प मी put that into reality. Let me just share this to you now. मैं तुम्हें उसका डिजाइन दिखाता हूँ. ये रहा, ये देख रहे हो.
काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है भी, कुछ भी बट नहीं आ रहा भैया। नहीं आ रहा। नहीं। आई ट्राई टू ये। तो ये बॉडी है इसकी, दिस इज अ 2D डिजाइन। ये फॉर्म ओरिगामी की तरह फोल्ड करके वो करता है एक्चुअली। ये दिखेगा, ये दिख रहा है रडर। यस भैया। तो ये दिस वेरी प्रिसीजन, इसका एक एक सेंटीमीटर चेक हुआ है। इसकी एक एक सेंटीमीटर, दिस इज द कैनपी, दिस इज द बैकअप रडर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द विंग। तो अभी समझ नहीं आएगा, अभय भैया विल गो ओवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द थर्ड स्टेप, precision designs and visualization। एंड इसके बाद लास्ट हमारा पार्ट आता है फील्ड वर्क, दैट इज getting it printed, assembled and working। यहाँ पे you face problems, you create solutions, and you go over this entire process again and again and again until you bring your visions to reality, right? And that is my moral, that is what everything I do stands for, and that is what everything you'll that is what I would want your philosophy to lie with. Never think anything is impossible. Just visualize it, put it down on a notebook, go through this entire process. I will share this document for all of you, and keep working. I am very sure that you will create some very interesting things in the future from these learnings. And I believe in all of you. And on that note, I will end this class. I hope you all had a really nice session. मजा आया आज? सही था ना? मैं बोरिंग तो नहीं हूँ? सच्ची बताना। चलो, nice. Okay, that's it for now. You all may leave. I'll share this document with all of you. Courtesy के लिए एक थैंक यू पेज प्रेजेंट कर देता हूँ. You may leave. भैया बोलो. भैया मेरे को ये पूछना था क्या आप विराज के भाई हो? हाँ जो 8th में है। हाँ हाँ. अच्छा ठीक है भैया, बाय। Bye.